Hello everyone. Today I am going to teach you about the treble clap. So what is the treble clap? I will share my screen so you can understand better. So you can see here, this is the treble clap sign. This one. This is. We call this G clap also. This is a fancy clap in music. Very fancy. You can see this. So what is a treble clap? Treble clap represent on the keyboard treble notes. It means you will play with this treble sign, treble notes on the keyboard. Yes, I will share my camera so you can understand it with my keyboard. So on your keyboard, you will play treble notes on C3 octave and C4th octave. Mostly you will play treble notes on C3 and C4th octave because this is high pitch note. These are the high pitch notes. Okay, so let's move on the what is the rule for the treble clap. This is the rule for the treble clap. Treble clap line and spaces name, lines and spaces name. So there is a basic things you will read according to the this theory. E G B D F on the line notes, and in space notes you will read it F A C E. If the notes is on space, then you will read it like this. Note can be anywhere in the space. This is the whole space is F, and same thing in next space, whole space is E, third is whole space is C, and fourth whole space is E. On the line, the first line you will read E, second G, third B, and fourth D, and last F. So you can remember in beginning with this mnemonic sentence, every good boy does fine. So if you suppose forget the pitch or letters, suppose note is on fourth line and you forget what is the in fourth line, so you if you remember this EGBDF, oh sorry, every good boy does fine, so you can pick it easily in beginning. Every good boy does fine, so in on fourth is does, so you will pick it easily T. Same in spaces, FACE. So remember this word face for the treble space. First is F, second is A, C, and E. If you forget what are the treble space, remember this word only face. Then spell this face word in this lower bottom to top or low to high, bottom to top like this. So this is very easy and this is very basic. स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, एवरी गुड वर्ड एज फाइन एंड फेस टू रिमेंबर ट्रबल लाइन एंड स्पेस नेम्स. So let's move on the how we will pick on the keyboard. So I will explain it. Where is this E? You will pick where. So in C3 octave, as I was told you in the last lesson. So see, this is the C3 octave. This is C3 octave. This is. So E you will pick C, D, E, this one. This is E pitch on the keyboard. It means on the first line. जो फर्स्ट लाइन का ट्रबल क्लैप का लाइन है बॉटम साइड में, वो E आप यहाँ पे पिक करोगे. देन G is higher from E. G is higher from
E, so you will pick higher pitch after E. So E, F, G. This is G, and next is B, so you will pick it higher from G. G, A, B. This is, and D is higher from B, so you will pick after B on higher pitch B, C, D. This is D on keyboard, and F is higher from D, so you will pick F is on this D, E, F. This one. So E, G, B, D, F. This is very easy to pick on keyboard. See, the first three notes on the line are in C3 octave. These are the in C3 octave, E, G, B, and next higher lines, fourth and fifth. This is D on fourth octave, and F is on fourth octave, like this. E, G, B, D, F. So I cleared your doubt where you will pick on the keyboard these lines. And now move on the spaces. In beginning I said treble clef mostly represents C3 octave and C4 octave. So note will be also in there, C3 and C4. So we will move on this spaces F, A, C and E. So F is lower, so F you will pick after this E, because after line space will come on this. This is the space. You can see here. This is the same space. So after E is F, this, and then A is higher from F, A, and C is higher from E. So C, this C is in third space, is on fourth octave, first key, this, and E is higher from C, so this is also in fourth octave. So F, A, C, E. So this is very clear, and and in beginning you have to keep in mind two more notes, because it will come in beginning in musical pieces. This D and C. This is D and C. So there is a theory part also. This is the laser line, a small line. We call this laser line. You can see this. This is laser line. So we use this laser line to add the notes on the staff, lower on lower side, higher on higher side, because except this 5 line and 4 space, there is a laser line pattern we will follow. If the note is coming on the top, on higher side, and on the lower side. So in beginning you have to keep in mind only this first bottom line, bottom laser line. Yeah. So I will repeat one more time. लेज़र लाइन का हम यूज इसलिए करते हैं स्टाफ पे हायर साइड और लोअर साइड में भी नोट्स आते हैं, एक्सेप्ट दिस 5 लाइन एंड 4 स्पेसेस. सो वी विल ऐड दैट टाइप ऑफ नोट्स विद लेजर लाइंस. ओके, सो जो नोट्स आएंगे वो हम लेजर लाइन के थ्रू ऐड करते जाएंगे. सो सी, एंड नेक्स्ट थिंग इज we will follow alphabetically pattern in this if the note is coming on laser line. Okay, so alphabetically descending order, यानी कि आगे से पीछे की तरफ करेंगे, और हायर साइड में आएंगे तो रेजिंग ऑर्डर पे करेंगे, यानी कि जो पैटर्न चलता है ABCDEFG वाला वैसे ही. ठीक है, तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं. ई इज ऑन फर्स्ट लाइन, दिस इज द स्टॉप लाइन. अगर नोट पहले आता है ई से पहले ऑन दिस प्लेस, वी कॉल दिस जीरो स्पेस. We call this zero space because this is not on the line. Okay, this is in space. See, in staff or laser line pattern, we will यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो होता है वो लाइन और स्पेस का होता है. तो लाइन हाई है तो उसके बाद स्पेस भी आएगा बॉटम साइड में, फिर लाइन आएगी, दोनों पैरेलल होगा. ये नहीं कि लाइन कहीं पे भी आ जाएगी, तो वो
प्रॉपर डिस्टेंस में होगा, गैप क्रिएट करेगा, तो जो गैप क्रिएट होगा तो वहाँ पे भी नोट आएगा और वो बन जाएगा स्पेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट जीरो स्पेस है, तो जीरो स्पेस में नोट जो आप रीड करोगे बिल्कुल सिंपल सा है डी, क्योंकि ई से पहले क्या आता है डी और डी से पहले क्या आता है सी। तो आपको इतना याद रखना है। तो फर्स्ट लेजर लाइन, लेजर लाइन पर नोट होगा तो लाइन नोट को क्रॉस कर देगी बीच से, जैसे यहाँ पे तो सी डी ई। सो अभी स्टार्टिंग में आपको सी डी बस याद रखना है। चलो इतना हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आफ्टर दिस, अबाउट द नोट वैल्यू। सो quarter note, half note and whole note. There are three notes to introduce about the quarter note, half note and whole note. So you can see this quarter note, half note and whole note. One minute, I'm setting my camera so I can present myself. Yes, quarter note, half note and whole note. I will share my screen again. Yes. So these are the note sign. We call this time value notes also, because this type of notes will tell us about the timing. What is the timing of the note? Suppose in this treble clef, you will pick only the pitch. What is the pitch? E, G, B, G, F, whatever. Okay, but how long time you will hold these type of note? It will decided by these sign: quarter note, half note, and whole note. There are three notes of introduction. So what is a quarter note? It's a black note with a stem. It receives one count or one beat like this. So what is a beat? So beat is a pulse or count. Beat is a pulse or count. If I'll count 1, 2, 3, 4. So this type of note will receive only one beat. Like if I am playing C note as a quarter note, so I can play four quarter note in 4 bit, because it will receives only one, like this: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Or quarter note we can play beat to beat. Now move on the next. There are two names in this: quarter and crotchet. ये ब्रैकेट वाला जो है अमेरिकन नेम है, एंड ये क्रॉचेट जो है तो ब्रिटिश नेम है। नोट साइन सेम है बट यहाँ पे नेम डिफरेंट डिफरेंट है। सो हमें दोनों ही याद रखना है, क्वार्टर भी याद रखना है एंड क्रॉचेट भी याद रखना है। ठीक है, सेकेंड नोट आएगा हाफ एंड मिनी। वी कॉल दिस हाफ एंड मिनी। मिनी मीन्स इन ब्रिटिश एंड हाफ इज अमेरिकन नेम। सो इट्स अ वाइट नोट विद स्टैम्प। स्टैम्प उस पर भी लगा था क्वार्टर वाले पे, यहाँ पे भी है स्टैम्प। तो दिस इज अ वाइट नोट बिकॉज सर्किल इज नॉट होल्ड इन दिस, सो इट रिसीव्स टू काउंट और टू बीट, यानी कि ये क्वार्टर से ज़्यादा काउंट लेगा, टू काउंट। सो इफ आई प्ले half note in 4 counts, so I can play only 2 half note, because 1 half note will receive 2 counts like this: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So this type of note you will, when are going to play, so you will hold till 2 counts. And this is the third note, semi breve or whole. Whole is my American and semi breve is British name. So whole note is a white note with no stem. यहाँ पे कोई स्टैम नहीं है, इट रिसीव 4 काउंट्स और 4 बीट। यहाँ पे ये नोट जो रिसीव करेगा 4 काउंट और 4 बीट रिसीव करेगा। सो वी कैन प्ले दिस टाइप ऑफ नोट्स one time in 4 bit. I will play it on first count and hold till 4 count like this: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I am playing C note. I will move my camera so you also can see this.
Yes, this is C. So I will play back to back all three note, quarter note, beat to beat. One, two, three, four. One, two, three, four. Now half note, one time in two count like this. One, two, three, four. One, two, three, four. And whole note, semi brave. One, two, three. Sorry. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. So in beginning, you can practice this type of note, quarter, half, and whole. So you can pick it easily the next sheet. The म्यूजिक सीट यू विल, अगर आप प्ले करोगे म्यूजिक सीट के साथ में तो ये टाइमिंग की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, सो आई विल कवर अ नेक्स्ट topic. This is about the bar line. What is a bar line? So जब स्टाफ को हम डिवाइड करते हैं इस लाइन से, ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है बार लाइन. वी कॉल दिस बार लाइन. लाइक दिस. सो अभी स्टाफ जो है 5 सेक्शन में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, एंड वी कॉल दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज अ मेजर. दिस इज द bar number 1 or measure number 1. We can say both bar number 2, measure number 2, bar number 3, measure number 3, bar number 4, and this is the 5. So what is the bar line works? How it works? The bar lines divide the music into the measures of same duration. What is the meaning of same duration? What is same duration? So you will see now, same duration, it means same timing. So you can see now there are 4 quarter in first bar, 1 2 3 4. So this bar value is 4 bit, and the line says it will divide into the same duration of, or into measures of same duration. So see the next bar, there are 2 half notes. So what is the value of 2 half notes? Is 4 count, because 1 half note is 2 count. So this is also same 4 bit. There is also 4 bit, and this is, there is only one note, whole notes. So this bar is completed because 4 beat are flowing in each bar, and in this also half 4 beat, and last is this 4 beat. So you will see यहाँ पे आप देखोगे कि हर बार में 4 बीट के नोट्स ही हैं, इससे ज़्यादा है ना उससे कम है. तो यहाँ पे ये बार लाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर है. चलो अभी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज. यहाँ पे एक साइन दिया है, इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. राइट हैंड एक्सरसाइज नंबर 1. तो यहाँ पे सब क्वार्टर नोट आपको प्ले करना है, C D E F. सो सी दिस, काउंट एंड प्ले 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2. और C D E F G G F E D C. In beginning, if you are going to play, so this will help you to match the correct time. You can clap and say the letters like this: C D E F G G F E D C. C D E F G G F E D C. So this is very easy. C D E F G G F E D C. Okay, so we can cover one more exercise. So here you can see this exercise number 2. So there are four notes: C C C C D D D D E E E E. So you can play like this: C C C C D D D D E E E E. F F F F G G G G G G G G.
I played last note and hold till 2 count because this is half note. So keep in mind, half note will take 2 beats. So we will play this now like this: C, 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 or 1, 2, 3, 4. So you will click it third C on 3 and hold it till 4 count like this: 1, 2, 3, 4. Got it? So, hmm, so today I covered this chapter number in chapter number 1 about the treble clap. This is the treble clap or G clap. ये हमने कवर कर लिया है और आपको हमने बता दिया है बेसिक्स क्या है ट्रेबल क्लैप का EGBD एफ एवरी गुड वर्ड एज फाइन एंड FACE ई ये आपको स्टार्टिंग में याद रखना है एंड सेकेंड थिंग हमने आपको ये भी बता दिया व्हाट इज अ लेजर लाइन लेजर लाइन का यूज होता है नोट्स को ऐड करने के लिए बॉटम साइड में एंड टॉप साइड में जैसे जैसे ऊपर नोट्स हाइयर अप पे आते रहेंगे वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे तो लाइन लेजर लाइन आएगी तो एक स्पेस भी बीच में बनेगा तो वो भी काउंट होगा तो अभी स्टार्टिंग में आपको डी और सी भी याद रखना है एक्सेप्ट दिस EGBD F और FACE and about the quarter note half note and whole note with the names crochet quarter crochet is American crochet is British so practice is all the things and I explained this also about the bar line what is the bar line so and you done this exercise also exercise number 1 and 2 so we will meet in next time and I will that time I will explain the new thing in basic level so bye bye you all